Okay, uh, last time in the last lecture we talked about selecting samples, and we discussed the population and the sample and why sampling is important and why do we not study the whole population, right? We also discussed different types of sampling. Primarily, there are two major types: some probability sampling and non-probability sampling, right? And then we talked about sampling frame, and we discussed that sampling frame is important if you want to go for probability sampling. If you do not have sampling frame, you simply cannot do probability sampling. Different steps we discussed, and then we discussed how to calculate sample size and the choice of sample size, how it influences the overall research activity, right? So today we are going to talk about different types. First, we would start with probability sampling, right? As we discussed in the last lecture, there are 5 major types of probability sampling. Probability sampling is, just to recap, is a type of sampling in which each case or each member of the population has a known chance of getting selected, right? So the first one is simple random sampling, systematic sampling, stratified random, cluster sampling, and multi-stage sampling. We discuss these sampling techniques one by one. First one, simple random. Simple random sampling means we take the sampling list or the sampling frame, right? And using the random number table, there are different random number, there are random number tables are available in the books of statistics and research books. You can also generate random numbers through an Excel workbook, right? There are other online programs available. If you simply type random number generator, you can find different websites which can generate random numbers for you. So random number from a list we randomly select, either through random number or through online random generator. We select our sample. This sample, the simple random sampling, is suitable when we really want to be random and the population is relatively homogeneous. No matter, there are no major groups, no major fractions within your population. If it is similar, then random sampling works very well, right? So this is the basic form of probability sampling. Random sampling, as you know, the name tells, simple random sampling. So we take a random number table and we generate our sample. Then one of the advantage of the random sampling or random numbers is that the sample is relatively unbiased. We do not have a bias in selecting sample, right? So it's perfectly random, and it is supposed that the more, it would be more representative of the population. Then comes systematic sampling. Systematic sampling is it's a modified form of random sampling. Sometimes we realize that by selecting samples, randomly, through simple random sampling, we may not get that representative sample.
So in order to ensure uh, different people falling in different series, they get selected. For example, one of the classic example of systematic sampling is the prize bond draw. So in the prize bond draws, prize bond balloting, what happens that you might know something about prize bonds. From each series, there are some people who win the prize. So in this case, problem with the simple random sampling is that you know since it is totally random, so there's a possibility that out of 1 million bonds, the top 3 prizes may fall in the first 100 bonds. So that maybe one person has bought the first 100 bonds, right, from 0 to 100. So uh, rest of the people might not get a good chance to get selected. So in order to tackle that problem, what do they do? There are two people from A series, two people from B series, two people from C series, and so on, right? So systematic sampling is applied. Another case of systematic sampling is, this is again random sampling, but it's random in a systematic way, right? So systematic sampling, for example, you may say, okay, from the sampling list, sorry, it's not completely random, as I earlier said. Basically, what we say, from the list or from the sampling frame, we would start with any number. For example, any number ending with 1. So for example, mobile number ending with 1. So we would take, like, 300 people or 3,000 people from mobile phones, from a list of mobile users whose number end with 1. Similarly, 3,000 people whose number end with 3. 3,000 people from people whose mobile number end with 4, right? So in this way, different people, falling in the different series, or they get a chance to be included in the sample, right? So select the first case using random number, right? Once that is done, then we calculate the sample fraction and select subsequent cases systematically through sample fraction to determine the frequency of selection. Third one is, which is very important, stratified random sampling. This is important in the sense because sometimes we have strata. Strata is the plural of stratum. Strata mean different classes, different, for example, within your population, you have very rich people, very poor people, then poor people, then middle class, then upper middle class. So there are different layers, different classes, in terms of income exist in the population. So what we want to ensure that people from each class, from each stratum, are selected in the sample, right? So in that case, what we do, the first step is to make strata, make different classes, make different layers, right? And then once the layers are created, for example, poor, very poor, middle class, upper middle class, rich, and then elite. So if we have 6 classes, then from each class we decide how many people we are going to select, right? And then from that class we would use simple or systematic random sampling, and we would collect we would finalize our sample. For example, we've decided that from very poor people we would have 100 people from the sample, right? So once
we decide that we have to take 100 people, then the next step would be to choose randomly, either using simple random sampling or systematic random sampling, 100 people from the poor class, right? So the advantage of using stratified random sampling is different strata are represented in the sample, which we might miss if we are doing simple random sampling, right? Similarly, another example could be if you are doing a research on students and you want to study all different classes of students, very poor in studies, who are okay in studies, who are very good, and who are brilliant. So if we take these 4 strata, right, then out of each strata, from each strata, you would select certain members, right? And your total sample would be consisting of 4 subset, very poor, average, very good, and excellent students. From each strata, you would select your sample. Then we have cluster sampling. Compared with stratified sampling discussed in the last slide, cluster sampling is, if you might have noticed here in the case of the stratified sampling, I use the term layers or subset or a class, right? Not a group. So in case of cluster sampling, what we do, we basically select groups. Now, what's the difference? For example, a class is a group. Within each class, there would be people who are very good, who are excellent, who are, blah, blah, who are very poor, right? So all type of people. So in stratified sampling, what we discussed is that we take sample from each class. In this case, we take sample from each group. For example, you want to study 7 campuses of ComStats, right? So each campus is a group. Within each group, there are very good students, there are excellent students, there are normal students, there are poor students, right? So within cluster, the people are different, right? But different clusters are similar to, one cluster is similar to another. As I said, in Islamabad campus, if you compare Lahore and Islamabad campus, both would have excellent students, both would have very poor students, right? But if we look at Lahore campus only, ComStats Lahore campus, then you would realize that within the campus there is heterogeneity, there is diversity, people are different. So in stratified sampling, when we talk about strata, within strata, people are similar. Like all rich people would share similar characteristics. All poor people would share similar characteristics. But when we make cluster, like one city is one cluster, there would be rich, there would be poor, there would be ultra rich, there would be ultra poor, right? So all sort of people are there. So cluster sampling is suitable when you, for example, you want to take data from different cities, right? You want to take data from different universities, different campuses. So in that case, cluster sampling is helpful, right? So again, cluster sampling is, you must have the sampling frame. Cluster sampling frame, it is necessary for all types of probability sampling. Okay. Then comes multi-stage sampling, or multi-stage cluster sampling. I mean, there could be different variations in multi-stage sampling. What multi-stage sampling is, for you combine different sampling techniques. For example, at the first step is that you
divide population into 4 major cities, right? Each city is a cluster. Then from within each cluster, you make strata. Within each city, you would say we have to make list of poor people, list of very rich people, list of middle class, right? And so within a cluster, there would be different strata. Within each strata, you would then conduct either simple random or systematic random sampling, right? So these are 5 different variations of probability sampling: simple random, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, and then we combine them and we make multi-stage sampling. Let's talk about the non-probability sample. Non-probability sampling is, it includes the non-probability sampling is where we do not select a sample randomly, right? It's not we do not sample collected through non-probability sampling technique may not have known chances of selection. So the first type of non-probability sampling is quota sampling. If we go back to this diagram, if you remember, look at that. So we have quota sampling, right? We have snowball sampling, convenience sampling, purposive, right, and self-selection. So let's discuss them one by one. The first one is quota sampling, right? So quota sampling is the first one. So it is entirely non-random, as I said. So since it is non-random, we may not need sampling frame, right? It is based on the premise that your sample will represent the population, as the variability in your sample for various quota variable is the same as that of population. Now, in one sense, it is similar to stratified sampling. You know, we make different strata. However, we can only do stratified sampling once we have sampling frame available. Quota sampling is therefore a type of stratified sample, right, in which selection of cases within strata is entirely non-random. You know, in social sciences, it's very difficult to get the sampling frame. You do not have always access to sampling frame, and that's why you cannot do the stratified sampling, and that's why we may go for quota sampling. We may say, okay, we don't know how many rich people are there, we do not know how many poor people are there in Lahore, we do not know how many ultra rich people are there, but we say, okay, we would collect 10% of the sample from ultra rich people, 20% from middle class, 30% from lower middle class, and 50% from very poor people, right? So what we do in case of quota sampling, divide population in specific groups, calculate a quota for each based on relevant and available data. Give each interviewer an assignment which states the number of cases in each quota from which they must collect data. जैसे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जनाब ये इतने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि 100 आपने केसेस अमीर लोगों के कलेक्ट करने हैं, राइट? 200 गरीब लोगों से करने हैं. So combine the data collected by interviewers to provide the full sample, and so these are the 5 steps. Now, it has certain advantages over the probabilistic technique. In particular, it is less costly and can be set up very quickly. If, as with the television audience research service, your data collection needs to be undertaken very quickly. आपको पता है बहुत सारे TV advertisement companies, TV channels जो हैं,
ये अपनी एडवर्टीजमेंट को बेहतर करने के लिए सर्विस करते रहते हैं। तो अब इस केस में सारे लोगों की लिस्ट लेना, वो उधर कौन कौन बंदा रहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो शायद वो ये डिसाइड कर लें कि जनाब 30% हमने डेटा लेना है पॉश एरिया से, 40% डेटा लेना है दरमियाने एरिया से, और 30% डेटा हमने पुअर एरिया से लेना। तो ईजी है और इससे आप क्विकली डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। Then comes purposive sampling. Purposive sampling or judgmental sampling. It enables to use your judgment. You know the purpose. You have a purpose in mind, and based on that purpose, you select the cases. You select the sample, right? So your judgment to select cases that will best enable you to answer research questions and to meet objectives. For example, आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हैंडीकैप जो लोग हैं, उनका जिनकी टांग नहीं है, या आप उनमें से कुछ जो पॉपुलेशन नेग्लेक्टेड लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो तो आप उनका डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि उनमें से वो कैसे आपने इकट्ठा करना है। आपकी जजमेंट है कि इन एरियाज में इस सैंपल ग्रुप का हमने इतना सैंपल इकट्ठा करना है। बेस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चंस you would choose this sampling technique, right? So this form of sample is often used when working with very small samples, such as in case research. मतलब केस स्टडी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार ये जो कंपनी है ना, इधर पिछले दिनों बड़ी 5-6 कंपनी है जहाँ पे वर्कर्स ने बड़ी स्ट्राइक्स की थी फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पर्पस से मैच करता है, इसलिए मैं इन कंपनी से डेटा इकट्ठा करूंगा। या फलां कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो मैं इन पे जो है पर्टिकुलरली रिसर्च करूंगा। ठीक है। Purposive sampling can also be used by researchers adopting the grounded theory, qualitative data, right? So for example, you know that purpose of your research is to explore companies who have achieved extraordinary success during coronavirus crisis. अब आप उस कंपनीज अपने पर्पस को सामने रखते हुए क्वालिटेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं तो इस केस में भी purposive sampling जो है ये हेल्पफुल है, right? Logic on which you base your strategy for selecting cases for a purposive sampling should be dependent on your research question and objective. ये मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, purposive की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने रिसर्च क्वेश्चन से या रिसर्च ऑब्जेक्टिव से अपना पर्पस डिफाइन करेंगे और उस पर्पस को सामने रखते हुए आप सैंपल साइज और सैंपल सेलेक्ट करेंगे, राइट? So there could be different variations right. Purposive sampling could be like I mean purpose could be different. I mean there could be different purposes. For example, extreme case और deviant sampling. आप कहते हैं जी extreme cases वो सारी companies जो कि सारी इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी लेकिन वो नीचे जा रही थी, एक्सट्रीम केस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिनमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स ख़राब हैं, तो उनको स्टडी करने की ज़रूरत है कि जी वो क्यों ख़राब हुआ उधर फाइनेंशियल। अब ये पर्पस बड़ा क्लियर है आपको और आपको इसके लिए वही केसेस हैं। अगर आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे या सारी कंपनीज को ले लेंगे, उनमें एक दो कंपनी की ख़राब भी परफॉर्मेंस आ रही है तो वो शायद बहुत सारे बाकी डेटा में उसकी परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं हो सकेगी। इस केस में आप कहते हैं कि एक्सट्रीम केस है, डेविएंट जो है ना केसेस हैं, उसको सैंपल के तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह हेट्रोजेनस और मैक्सिमम वेरिएशन सैंपलिंग, where you want the purpose is to capture maximum variation, right? आप कहते हैं कि मुझे हर क्लास का, हर इकोनॉमिक क्लास का बंदा जो है रिप्रेजेंट करे, ठीक है,
बहुत गरीब से लेके बहुत अमीर तक सारे लोग हों, या आप कहते हैं कि जनाब मैंने देखना है मोबाइल फ़ोन यूज़र जो कि बिल्कुल यानी नॉन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वहाँ से लेकर मैंने आईफोन तक सारे यूज़र्स को कवर करना है। अब इस केस में आपको पर्पस आपका है कि आपने देखना है, फॉर एग्जांपल आपकी स्टडी का पर्पस यह है कि आप ये चेक करना चाहते हैं डिफरेंट लोग मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देखना चाहते हैं जो इसका असर आपके पास स्मार्टफोन कौन सा है, इसका असर कितना पड़ता है आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन परचेजिंग हैबिट से फॉर एग्जांपल। तो अब इस केस में इसलिए आपको सारे डिफरेंट क्लासेस लेना पड़ती हैं। तो आप ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम वेरिएशन, मैक्सिमम हेट्रोजेनिटी जिस डेटा में वो डेटा आप यूज़ करें, राइट। diverse characteristics, right, as I mentioned earlier. Then come opposite of heterogeneous is homogeneous sampling. आप कहते हैं नहीं यार मैंने सिर्फ और सिर्फ आईफोन यूज़र जो बहुत अच्छे महंगे फ़ोन यूज़ करते हैं, मैंने उनको देखना है कि वो उनका पैटर्न क्या है। तो इस केस में आप एक सैम्पल का खास हिस्सा सिलेक्ट करेंगे अपने रिसर्च के पर्पस की वजह से। Similarly, critical case sampling selects critical cases on the basis that they can make a point dramatically or because they are important. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब मोटरवे पुलिस एक बड़ा क्रिटिकल केस है या टिपिकल केस है जिसमें करप्शन बहुत थोड़ी होती, तो मैंने अब वही हर चीज़ हर महकमा मैंने सरकारी नहीं स्टडी करना, बल्कि मैं कर तो गवर्नमेंट सेक्टर पे ही स्टडी रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है रिसर्च पर्पस की वजह से वो ये है कि मैं मोटरवे पुलिस को स्टडी करूँगा, राइट। Obviously there are problems associated with the generalization. Sometimes, you know, obviously the purpose is to understand why it is happening in one company and whether it can apply to the other companies or not. But sometimes, you know, critical cases may not represent the whole population, right? So there are problems with the generalization. Typical case sampling. In contrast to critical case sampling, typical case means you usually part of the research project to provide illustrative profile using representative. अब critical case एक जो बहुत critical, दूसरा typical आम जो cases हैं वो क्या हैं, ठीक है। Such a sample enables you to provide an illustration of what is typical. What is typical? Typically आप कहते हैं सारी इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही हैं, एक कंपनी फायदा उठा रही थी, वो अब आपका क्रिटिकल केस बन जाएगा एक कंपनी, और जो सारी बाकी ज़्यादातर हैं वो टिपिकल केसेस में आ जाए। नेक्स्ट टाइप जो है सैम्पलिंग की उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्या है? एक बंदे को मतलब कई दफ़ा ये होता है कि आपको सैंपल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वो जो आपकी टारगेट लोग हैं, टारगेट रिस्पोंडेंट्स, उनको सर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं उन लोगों पे जो कि फॉर एग्जांपल ऑटिज़म, बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, ऑटिज़म की बीमारी होती है, या किसी को एलर्जी है वीट से, ठीक है ना, ग्लूटेन एलर्जी उसे कहते हैं। तो अब आप ढूंढने, अगर ना तो कोई लिस्ट उसकी अवेलेबल है, लेकिन आमतौर पे होता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं एक बच्चे को ग्लूटेन, वो आमतौर पे और फैमिली से भी इन टच होती हैं, वो आपस में मशवरे करते हैं। तो आप इस केस में एक बंदे से करते हैं इंटरव्यू करते हैं, या उसे कहते हैं यार कोई और बंदा अपने जैसा जानते हो, वो कहता है हाँ फलां बंदा, उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं 2 बंदे और बता दो। अब इस तरह आप अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इस तरह आप नए केसेस जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है जी। Self-selecting sample, it occurs when you allow
each case usually individual to identify their desire to take part in the study. Therefore, publicize your need for cases either by advertising. अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे लोग फेसबुक पे डाल देते हैं कि जनाब ये मेरा स्टडी है जिसका दिल करता है. लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग डेटा फिल करवा रहे हैं. ठीक है, तो आप कहते हैं कि जनाब ये मेरा वो है, ये मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, जो बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी मर्जी है, इधर आके मेरा क्वेश्चन फिल कर दो. इसको कहते हैं सेल्फ सेलेक्टिंग सैम्पल. ये स्पेशली उन सिचुएशन में बड़ा फ़ायदेमंद है जब डेटा कलेक्शन बड़ी मुश्किल हो, एक्सेस जोग्राफिकल यानी प्रॉब्लम्स हों, आप बहुत दूर नहीं जा सकते, लोग बड़े फैले हुए हैं. और स्पेशली आजकल सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे लिंक्डइन और फेसबुक और ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये इसका यूज़ बहुत बढ़ गया. राइट, देन कम्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग. We also call it haphazard sampling. Haphazard और convenience sampling. जो बंदा जिधर से, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैंने लोगों से पूछना है कि उन्हें जब वो मिनरल वाटर की या ड्रिंकिंग वाटर की बोतल खरीदते हैं तो कैसे वो सिलेक्शन करते हैं. तो आप एक पान शॉप के बाहर या आप एम्पोरियम मॉल के बाहर या किसी मॉल के बाहर खड़े हो जाएं, दुकान के बाहर खड़े, जो भी आता है कन्वीनियंट यही है. आप कहते हैं यार मैं घरों में बड़ा मुश्किल है लोगों के जाके ढूंढूं और रैंडमली सेलेक्ट करूं. मेरा सिर्फ अगर मुझे 30 40 50 लोगों से या 200 बंदों से वैसे भी कर लूँ एक जगह पे खड़ा होकर, जो भी कन्वीनियंट है मेरे लिए, ईजी है, तो भी मेरा पर्पज़ पूरा हो जाएगा. तो इस केस में वो आप जाएंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरफ. और बहुत ज़्यादा सोशल साइंसेज में स्टूडेंट्स कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर सकते बहुत दफ़ा, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम ही नहीं होता. आमतौर पे जिधर कोई जानने वाला हो, जिस फैक्ट्री में जिस बिजनेसेस में आप कहते हैं मेरे 10 बंदे 10 बैंक्स में जाने वाले, मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मुझे फिल कर दें. अब ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. जो और आपके घर के नज़दीक हैं जो बैंक्स, आप उधर से जाके डेटा इकट्ठा कर देंगे, इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. राइट, sample selection process is continued until your required sample has been, for example आपने डिसाइड किया 300 बंदे मैंने थ्रू कन्वीनियंस सैम्पलिंग इकट्ठे करने हैं, 300 पूरे हो जाते हैं तो आप अपना सैम्पल, आप समझ जाए सैम्पल पूरा हो. Although this technique of sampling is used widely, मैंने जैसे कहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, it is prone to bias. हो सकता है सारे के सारे जो लोग हैं जो एम्पोरियम में आते हैं वो ज़रा ज़्यादा पैसे वाले हों और आप उनसे वो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं जो कि गरीब लोगों से रिलेटेड हैं, तो बायस का चांस है. ठीक है, ठीक है. और इसी तरह एज द केसेस अपीयर इन द सैंपल ओनली बिकॉज इट्स इजी टू ऑब्टेन देम. हमने कोई ये कोशिश नहीं की कि सारे लोगों से डेटा इकट्ठा करें, या रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से हम जो भी इजी हो हमारे लिए हम उससे डेटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए बायस के चांस जो हैं बायस के ज़्यादा है. ठीक है. ऑफन द सैंपल इज intended to represent the total population. For example, managers taking an MBA course as surrogate for all managers. In such instances, selection of individual cases is likely to have introduced bias. आप कहते हैं जनाब जो बड़े सीरियस हैं लोग करियर में, वो MBA करने आएंगे जॉब के साथ साथ, तो आप एक MBA की क्लास में आके सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, तो हो सकता है बहुत सारे करियर माइंडेड लोग हों जो इधर ना बल्कि ऑनलाइन कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो, या वो वैसे इनफॉर्मल लर्निंग पे बिलीव करते हैं और वो उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड ना किया हो, तो आप उनको इंटरव्यू करने से या उनसे डेटा इकट्ठा करने से रह जाएंगे. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की कुछ बहुत सारी फ्लॉज भी हैं. राइट, सो जस्ट टू समराइज प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए सैम्पलिंग फ्रेम बड़ा ज़रूरी है, रिजल्ट्स रिलेटिवली ज़्यादा जनरलाइजेबल होते हैं और रिलेटिवली ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत दफ़ा ये पॉसिबल ही नहीं होता और हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ ही जाना पड़ता है. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो फिर उस केस में हम क्या करते हैं,
सैम्पल साइज डिसाइड करते हैं और जो भी अप्रोप्रिएट हमें तरीका नज़र आता है, जिस तरह हम समझते हैं कि बेहतर हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से, रिसर्च पर्पस से मैच करता है, हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए ना, आप बड़ा एक्सीलेंट तरीका सोच लें कि जी इससे अच्छा रिसर्च जो है ना सैम्पल सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, और आप सेलेक्ट करके सैम्पल आपने अपनी दानिश में कर लिया और आपने कहा जी मैं फलां फैक्ट्री से जाकर डेटा इकट्ठा करूँगा और वो आपको गेट के अंदर ही ना जाने दें, तो उस केस में बहुत अच्छा भी सैम्पलिंग टेक्निक है, वो यूजलेस। आपने ये भी देखना है कि प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे है। तो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी ऑफन गो फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट? So that's all for chapter number 7, right? So we finished chapter number 7. Let's go through it very carefully. This is very important chapter, you know, sampling. You can, there's further, there are a number of illustrations in your book. Go through them, right? And then if you have any problem and question, then we can discuss your problem. I'm stopping recording here. If there are any question, you can either post on your MS team or you can ask otherwise, right? So the recording is being stopped.